Now, we have learned about molecules. Now, the next thing that we are going to understand is elements. Now, what are elements? Elements are substances that are made of same types of atoms. Okay. Now, there are 118 elements that we know of. हमें 118 elements के बारे में उनकी existence हमें पता है कि इस world में है. And 98 of them exist naturally. मतलब naturally हमें पता है कि इस world में पहले से ही 98 elements थे. तो पहले तो हमने बोला कि 108 elements है. Now I am saying कि naturally existing elements are only 98. So which means जो remaining elements हैं that were made by humans, that is scientists in the labs. Okay. Now some elements that you would have heard is oxygen, copper, aluminium, iron, carbon, nitrogen, gold and silver. So these are all examples of elements. Now if you see carefully, सबके आगे मैंने ब्रैकेट में छोटे छोटे 2 अल्फाबेट्स या 1 अल्फाबेट्स का सिंबल यूज किया है. दीज आर कॉल्ड सिंबल्स बिकॉज नॉट एवरीवेयर कैन यू राइट सच अ बिग स्पेलिंग. सो फॉर ऑक्सीजन वी यूज द सिंबल O, कॉपर वी यूज CO, एल्यूमिनियम Al and so on. So these are called symbols. Now next point that we should understand about elements is smallest particle. मतलब सबसे छोटा particle of an element that shows the same property. मतलब same property वो show कर रहा है, उसको atom बोलते हैं. Element का सबसे छोटा particle that shows the same property is called as atom. Moving on to the next slide. Now, like I told you, there are 118 elements. So this is a table जिसमें कि सारे 118 elements लिखे हुए हैं. So these are those elements and you can see different symbols are used for each element. You will be learning about this in future. Now, next that we'll be learning is compounds. What is a compound? It is a substance made of different elements. मतलब अलग अलग एलिमेंट्स को जब हम साथ में लाते हैं देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल वी से वाटर और सॉल्ट. अगेन वी आर टेकिंग दीज एग्जाम्पल्स. हमने पहले वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉमन सॉल्ट. दीज आर द 2 things that you very commonly use. Common salt or the salt that you are using in your food, that is called as sodium chloride. तो हम यहाँ पे 2 elements का नाम सुन रहे हैं. That is sodium and chloride. For water we are using hydrogen and oxygen. तो इन दोनों में if you notice these are the different elements. See the definition says it is a substance made of different types of elements. तो ये different type of elements हैं जो कि water and common salt में use किए जाते हैं and therefore it is called a compound. इससे पहले in the definition of elements we had seen कि एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे एक एक सिंबल से. बट यहाँ पे वी सी दैट ज़्यादा एलिमेंट्स हम देर आर 2 elements that we are using. There are 2 different symbols that we are using together. So this is called as a formula क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट कंपाउंड्स इज the smallest particle of a compound that shows same property is a molecule. स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड जिसमें सेम प्रॉपर्टी दिखते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल.